Good afternoon, dear students. Ready for computer class? I hope you all are very well with your family. So, in the session of today's class, we will learn about basic structure of a computer system and component of CPU. So, here we discuss about with the help of diagram. So, student, this is your basic structure of a computer, and here in earlier video you know that there were input unit, output unit, processing unit and storage unit. Okay, so according to this, the basic structure of our computer system, here you see input unit. Through input devices we enter the data. Okay, data. This is your CPU, central processing unit, and in that CPU here is your processor and here is main memory. That means, and here you see these are arrows. Okay, so these are connected through wires. Okay, and here you see there is two-way. Okay, two-way, that means if we enter data in our computer system, then it goes to CPU, that means processor, and the processor save that data for temporary basis. Okay, further our processing going on. Now again, when our processing completed, then it save into external memory for permanently, and that same time it sent output to us through the output devices. Okay, so this is the basic structure of our computer system. Now we will discuss about the components of a CPU. So student, you know, in components of CPU there is ALU, CU and MU. Okay, arithmetical logical unit, control unit and memory unit. Let's see about how all these work. So input, through input devices we enter the data. ठीक है, and this completely show your CPU. ठीक है, ये complete आपका क्या show कर रहा है? CPU. So we enter data through input devices and it goes to control unit. ये किसके पास गया? Control unit के पास. ठीक है, then control unit for temporary basis is save that data in register and same time it give instruction to ALU. ठीक है, what they have to do. ठीक है, उनको क्या करना है. ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट ने पहले क्या किया? टेम्परेरी बेसिस पे रजिस्टर क्या होता है आपका? टेम्परेरी बेसिस डाटा आपका सेव करता है, क्योंकि रजिस्टर में बहुत थोड़े मिनिमम अमाउंट में ही हम डाटा स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, और टेम्परेरी बेसिस. ठीक है, सो कंट्रोल यूनिट सेम टाइम में एलयू के बाद भी अपना इंस्ट्रक्शन भेजेगा दैट व्हाट टू डू. ठीक है, सो व्हेन अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट गॉट इंस्ट्रक्शन बाय CU. ठीक है, तो ये क्या करेगा? प्रोसेसिंग स्टार्ट करेगा. आफ्टर द कॉम्प्लीशन ऑफ द प्रोसेसिंग ये क्या करेगा? सेंड द रिजल्ट टू कंट्रोल यूनिट एंड सेव दैट डाटा इनटू मेमोरी. ठीक है, सो कंट्रोल यूनिट व्हेन गॉट द आउटपुट. ठीक है, कंट्रोल यूनिट के पास जब उसका रिजल्ट आ जाएगा प्रोसेसिंग के बाद. ठीक है, तो ये क्या करेगा? इज सेंड द आउटपुट थ्रू आउटपुट डिवाइसेस एंड सेव द डाटा फॉर permanently in secondary memory. ठीक है, so we got that result any time from our computer system. ठीक है, तो just because of it save our information permanently. ठीक है, so this is all about your components of a CPU, how it functions. ठीक है, it's sent to control unit and same time control unit save the data in register and give instruction to arithmetical logical unit what to do. ठीक है, and then processing going on and it save in memory. ठीक है, and same time it send to control unit the result, then control unit send to us that information and same time it save into secondary memory. So this is all about our components of a CPU.
हियर रजिस्टर शोज योर रजिस्टर और मेमोरी शोज योर प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, मेन मेमोरी जिसमें आपका टेम्प्रोरी बेसिस पे डाटा सेव होगा. सो हियर ऑल दिस एरोज कनेक्ट हियर शोइंग दैट इज कनेक्टेड थ्रू वायर, ठीक है, सब एक दूसरे से वायर से अटैच हैं.